Hello viewers, the question is the work function of cesium metal is 2.14 electron volts. When light of frequency 6 into 10 power 14 Hz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the part A? Maximum kinetic energy of the emitted electrons. Part B, stopping potential. And part C, maximum speed of the emitted photoelectrons. So the problem is based on the topic photoelectric effect. Now in this particular problem, first of all we have to calculate the maximum kinetic energy of the emitted electrons. So there is a metal known as cesium. Its work function is given as 2.14 electron volts, and a certain light of energy is incident upon it, and there is a generation of photo electrons here. So we know the relationship K equals to h nu minus phi naught, where K is the kinetic energy, h is the Planck's constant, nu is the frequency, and phi is the value of the work function of this particular material or metal. Its value is given in electron volts. So we have to calculate this incident energy in terms of electron volts. So after putting the respective values of h and nu, now h is 6.626 into 10 raised to the power minus 34. Nu, which is the frequency, is given as 6 into 10 to the power 14 Hertz. So to calculate it into the electron volts, we have to divide this value by 1.6 into 10 to the power minus 19. Now this particular expression, it becomes in electron volts now, and phi naught is given as 2.14 electron volts. After solving this, the value of the kinetic energy, it comes out to be 0.345 electron volts. So this is the value of the kinetic energy of the emitted electrons. In the B part, we have to calculate the stopping potential. So we know the relationship between the kinetic energy and the stopping potential. K is equal to E into V naught. Now putting the respective value here. Now K, which we have calculated as 0.345 electron volts. Now this is equal to E into V naught. Now this E cancels with this E, and now we can say that the stopping potential is given by 0.345 volts. 0.345 volts. This is the value of the stopping potential. Now the next part. In the next part, we have to calculate the maximum speed of the photoelectrons. Now we know the relationship between the kinetic energy and the speed, which is K is equal to half mv square. The kinetic energy we have calculated in the earlier part. So from this expression, V square is given by 2k upon m, or we can say that V is equal to square root of 2k by m. Now putting the respective values here, square root of 2 multiplied by 0.345, this is the kinetic energy which we have calculated. This is in electron volts. So first of all, we have to convert it into joules. So we have to multiply it by 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and we have to divide it by, we have to divide this expression by the mass of electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. So after solving this, this value comes out to be the speed of the photo emission or the photoelectrons comes out to be 3.323 into 10 raised to the power 5 meter per second. 5 meter per second, or in terms of kilometer, we can write it as 332.3 kilometer per second. So this is the speed of the photo emission of the photoelectrons. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि वर्क फंक्शन सीजियम मेटल का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज अगर इंसिडेंट होती है इस मेटल सरफेस पे, तो फोटो एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। हमें बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, और बी पार्ट में हमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, और सी पार्ट में बताना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेटल लिया गया है, सीजियम मेटल लिया गया है, उसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सर्टेन एनर्जी इसके ऊपर डाली जा रही है, सर्टेन लाइट इसके ऊपर डाली जा रही है, जिससे कि फोटो एमिशन प्रोसेस हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम कहेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उससे हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। h की वैल्यू हम पुट करेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.626 इंटू टेन पावर -34, और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे 6 इंटू टेन पावर 14 हर्ट्स। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें जो फ्रीक्वेंसी और h को मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो जूल्स में आता है, जबकि हमें फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है। तो इसलिए पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें 1.6 इंटू पावर -19 से डिवाइड करना होगा इसे सॉल्व करने के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है k इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो यहाँ से हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको हमें बराबर रख देना ई वी नॉट के, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाता है और हमें वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सी पार्ट में हमसे पूछा गया स्पीड, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से बाहर निकल रहे हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में एक रिलेशनशिप होता है k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चूज करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा आ जाता है स्पीड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k अपॉन m। जो हमने कैलकुलेट किया था काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेट किया था 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। स्पीड ऑफ लाइट जो कि हम मीटर पर सेकेंड में निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसे हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जूल्स। तो उसके लिए हमें 1.6 इंटू पावर -19 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद और m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आती है स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो आती है 3.323 इंटू टेन पावर 5 मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 332.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। So hope you understand the explanation. Thank you.